So this was day 2. I got up at 7 o'clock and it was really nice and soothing to see mountains around you. I thought of capturing it. Today is day 2. हम लोग सुबह 7 o'clock को जगे and then there was a very beautiful view जो मैं शायद क्लिप के स्टार्टिंग में लगाऊंगी and then we went for a walk. वहाँ पे मेन रोड पे जाके we clicked a lot of pictures. उसके बाद we got fresh and ready for our trip. आज we are going to Dubare camp, then Golden Temple and few more places. Let's see how it goes. I'll show you my OOTD, which is this. And here is boy. She's looking pretty. बहुत सुंदर लग रहा है सही में. And बैग भी बहुत सही मैच हो जाएगा. So चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए. And after breakfast हम लोग का कार आएगा by 8:30-8:45. And we'll go. Bye bye. And then हम लोग breakfast करने के लिए आए ऊपर and this was a very nice view while having breakfast. We had bread butter, bara and fruits for breakfast. We are ready to go. हमारा गाड़ी आ गया है. भैया आपका नाम क्या है? Rahim is the one who's taking us and we are going. Here is going. And we go. फाइनली तो दुबारे कैंप एंड देन हम लोग को ये नहीं पता था कि पानी से जाना पड़ता है. हम लोग पहन के आए शूज़. वी डिड नॉट इवन कैरी आवर क्रॉक्स एंड स्लाइड्स. देखते क्या होता है. इट्स अ लिटिल बिट एडवेंचरस. देखते लगता है. हम लोग तो लिया नहीं अपना. कैसा लग रहा है बॉय? इन द मिड ऑफ नोवेयर. दिस इज द ऑल वे वी हैव कम. मिडल ऑफ वाटर. बस पानी ही पानी. बस यही हम लोग का एक. वी हैव कम जस्ट वेरी लॉन्ग. मतलब अभी तो दिखा नहीं पा रहे हैं हाउ डेंजरस इट वाज. तो डैम ऊपर ही दिखा. This is the way we have come to. It was damn slippery. अभी सामने ये बाकी है. If you're coming to Dubare camp, make sure to carry one more extra pair of clothes and shoes as well, because the way you come through is through water and there are rocks above it, so you cannot wear your shoes or slides or Crocs and you have to come barefoot. And why I said extra pair of clothes, because आते वक्त आपका पूरा कपड़ा भीग जाएगा. पानी बहुत होता है and at least मतलब थाइस तक तो पानी रहता है. इसीलिए अगर if you have extra pair of clothes you can change it. There is a dressing room outside as well. We were not aware about all this information, so we had to go through a lot of challenges. Nevertheless, it was very fun. And then you have to pay 50 rupees after you come through the waterway, and if you want to bathe the elephant you have to pay 200 rupees extra, because elephant के वहाँ पे the elephant would shower you and then you can have fun scrub the elephant as well. Here you can see boy getting very excited and moving near the elephant. We are almost late. boy दौड़ के जा रही है करने के लिए because she can't keep her calm. वीडियो ले रही हूँ, फोटो भी ले रही हूँ. आ जा पानी में इधर देख.
मैं ले ली हूँ। पूरा भीग गए हैं, लिटरली भीग गए हैं। This was so fun and the kids were shouting और एक बार, once more, once more. It was really nice. एंड यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली नहा लिए थे बिकॉज एलिफेंट हम लोग को ही शावर करवा रहा था एंड शावर करवा के अभी जा रहा है एलिफेंट। We could not capture everything here in camera because we were getting showered. पूरा हम लोग we are completely drenched. बस थोड़ा सूखना पड़ेगा and then let's see what to do. Here we are in the next spot, which is the Chikli Dam, just few kilometers away from Dubare camp. You do not have to pay any tickets out here to enter. It's a free and open space, really soothing and really nice. आपको दिख रहा है इतना सुंदर सीनिक ब्यूटी। माय कैमरा इज नॉट एट ऑल डूइंग जस्टिस टू द एंटायर ब्यूटी जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। सो इट्स वेरी पीसफुल हियर। हम लोग आते ही हम लोग को दिख रहा था इट्स वेरी पीसफुल। पानी में नहीं जा सकते, पानी नहीं है, बट स्कॉटलैंड तो कभी गए नहीं है लाइफ में। फ़ोटोज़ में देख के लगता है कि एक्चुअली दिस इज़ लाइक स्कॉटलैंड बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी प्रोबेबली। सो ट्राइंग टू शो यू द ग्रीनरी। पता नहीं कितना कैप्चर हो रहा है बट इट्स रियली नाइस। कैसा लग रहा है बोल तुझे यहाँ पे? बहुत पीसफुल। यहाँ पे एक भी साउंड नहीं है। यू कैन हियर द बर्ड्स चीपिंग और पानी का ठंडा हवा। सही में ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कैसा लग रहा है जो देख रहे हैं। यू हैव टू कैप्चर इट इन योर मेमोरी। एग्जैक्टली, कैमरा में नहीं आएगा वही। और हम लोग को एक ही दुख है कि हम लोग दोनों का एक साथ फ़ोटो नहीं मिल रहा है कहीं से भी। वी डोंट हैव अ सेल्फी स्टिक एज वेल। तो हम लोग कुछ भी करके जुगाड़ करके अपना फ़ोटोज़ ले रहे हैं, बाहर सेल्फी ले रहे हैं। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्पॉट क्या है। बाय बाय। So this was our third spot. This was known as Bamboo Island, and there are other names as well, which I do not remember at this point in time because this place was not that great to visit. If you are just going for one day, please exclude this from your list. It has just got bamboo trees and nothing else, and a boating space. That's it. So you can skip this place. There's nothing much to watch there. So we are here after lunch. लंच कर लिए, बहुत भूख लग रहे थे। अभी आए हैं मोनेस्ट्री and this is really pretty. I'm gonna show it to you all. This is how it looks. It's really nice. Let's see अंदर क्या है and then हम लोग और एक ऊपर जगह है जाने के लिए। If we can, we'll go there and we'll try to show you the view. This place is called the Tibetan Monastery or the Golden Temple Coorg. There is no entry fee. It is open Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. This is just few distance from Chikli Dam. Hence, it was very easier for us to reach. The tiny Tibetan colony in Coorg is an ideal escape from the hustle and bustle of the city life. The enclosed calm and the spiritual ambience of the place welcomes all the visitors. The Tibetan monastery is located around 6 kilometers from Kushalnagar, which is one of the places here. There are around 600 monks here, which is an approximate number. It was a treat to watch all the monks do their work with such accuracy and focus. Great learning experience to see how you can keep your calm and silence gets the work done. Here we are in the fourth spot, which is coffee plantation. यहाँ पे the entry is 200 rupees and you get an entire tour of the coffee plantation here.
कुर्ग में आके कॉफ़ी प्लांटेशन ही नहीं देखा तो देखा ही क्या. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट स्टारबक्स यूजेस 90% ऑफ कुर्ग कॉफ़ीज? आई डिड नॉट नो इट. कमेंट में बताइएगा. So, with a tour to the lush green trails of coffee plantation of Coorg, you can learn about the Robusta and the Arabica beans that are grown in this region. Right from the process of selecting the ripped coffee beans to the process of harvesting them, you can know about everything at once. We got ourselves handmade cocoa chocolates and coffee from here with some chili pickle, which was really nice and really hot, believe me. We were so tired and exhausted with the walk around the coffee plantation, so we decided to have a cup of coffee, and we found this cafe called Big Cup, which is a must visit if you are in Coorg, because they have got very nice interiors and they serve the best coffee here in Coorg. में आ गए हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है, बट मैंने वीडियो नहीं लिया because मेरा फोन का बैटरी डाउन हो गया, बट देयर आर फ्यू इमेजेस. पक्का आई विल ट्राई टू पुट इट इन. आज दिन में कितना कुछ किया हम लोगों ने नहीं करेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ. स्नैक्स ला के रखे थे यहाँ पे, स्नैक्स कर लेंगे. विल गो फॉर अ वॉक एंड दैट्स इट फॉर डे 2. एंड इट वॉज मोर देन इनफ. मतलब बहुत इन्जॉय किए, बहुत 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 इन्जॉय किए. एंड द सीनिक ब्यूटी इज़ लाइक वाओ. हम लोग कैमरा में तो कैप्चर कर ही नहीं पाए. माई कैमरा इज़ वेरी बैड. अगर मे बी अगर अच्छा कैमरा होता तो शायद अच्छे से कैप्चर कर पाते, बट नेवरदलेस जितना कुछ कैप्चर किए हैं फॉर श्योर, मतलब वहाँ पे समझ में आएगा हम लोग कितने खुश थे, कितने फुलफिल्ड थे कि ये फाइनली डिसाइडेड कुर्ग एंड इट वाज द बेस्ट प्लेस. एंड फाइनली वी मेड श्योर कि हम लोग जैसे प्लान किए हैं वैसे ही चले. इट वाज ऑल इन ऑल डे 2 वाज आल्सो सक्सेसफुल. नाइस. क्या बोलते हैं भाई, इट वाज बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. मैं ऑनेस्टली पहले नहीं गई हूँ ट्रिप पे, बट दिस वाज माय बेस्ट टाइम. कुर्ग मतलब आना ही चाहिए. जिन लोगों को नेचर पसंद है उनको आना ही चाहिए. यू कैन नॉट मिस द सीन. एग्जैक्टली. ठीक है, चलो देन विल सी डे 3 में क्या क्या कर सकते हैं. एंड देन अभी इट्स ऑलरेडी संडे, मंडे एंड देन ट्यूसडे वी आर गोइंग बैक. तो देखते हैं कितना कुछ कैप्चर कर सके एंड आप लोग को दिखा सकें. Till then, take care of yourself. Bye.